तो ये डायबिटिक फुट के ऐसे कुछ अर्ली साइंस सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, या कभी कुछ ऐसा साइंस वो देखते हैं तो इमीडिएटली उनको मेडिकल इंटरवेंशन का नीड है? यस, सो जैसे मैंने बताया कि पैरों के सेंसेशंस कम हो जाना, पैरों का ब्लड सप्लाई कम हो जाना, दिस लीड्स टू फ्यू abnormalities. One of them can be, first thing that anybody can observe is change in the shape of the foot. So normally हमारा जो foot होता है, that foot that starts changing the shape. So sometimes these toes which are supposed to be like this, they starts getting crumbled. Sometimes your thumb, it starts getting crumbled. Sometimes you start getting callosities or hardness of the skin on the under surface of the feet. Sometimes you start getting ulcers in between the toes. You start getting change in a color of the foot. These are the signs or these are the symptoms that you should not ignore. Happy and healthy morning, friends. Welcome back to one more episode of Aura Health. I am Baljeet Kaur Ramsinghani, founder of Aura Health, nutrition and lifestyle coach, helping patients and corporates to lead a medicine-free life by adopting right nutrition as their lifestyle. We spoke about first aid in our last episode, and we have yet one more interesting topic in this episode. So today we are going to talk about diabetic foot. And we have an amazing personality with us. We have Dr. Om Agarwal, a reputed surgeon from Mumbai. He is a director at Indigo Hospital, Mulund, and a practicing surgeon with more than 15 years of experience. So welcome Dr. Om Agarwal to Aura Health. We are privileged to have you with us today, and thank you so much for accepting our invite and being with us today. So we would love to hear more about you. Thank you so much for inviting, ma'am. So I am Dr. Om Agrawal, consultant plastic and reconstructive surgeon, I've been practicing in Mulund and Thane area since last 8 years. I have been practicing surgery since last 15 years. Awesome. So, before we start with our topic, we would also like to know more about your hospital, Indigo Hospital. So the idea of Indigo Hospital came into existence when we three brothers, Dr. Ashish Agrawal, who is a cardiologist, Mr. Anup Agrawal, who is an engineer MBA, and myself, I'm Dr. Om Agrawal. So we thought of establishing a setup where a patient can come without hesitance for any kind of a care or a hospital care, be it from a simple small surgery to serious surgeries like open heart surgeries, angiographies and angioplasties. So we have put up a setup which is a 51-bed hospital which is NABH accredited, and it has got facilities like ICU, operation theaters and whatnot. Thank you so much, sir. That's very interesting. And, before we speak about diabetic foot, it's a very, simple question, but yet very important. So what is plastic surgeon and why this name, plastic surgeon? Interesting question. There is a misconception that plastic surgeon, or I will call it a joke rather. People think plastic surgeon means they must be using plastic. That is a poor and bad joke. So plastic surgery, this word came into existence. It followed a Greek word by the name plastikos. That means to mold. So to mold or reconstruct is a part of a plastic and reconstructive surgery. That is how the plastic surgery word came into existence. Right. So now we can actually expand it because we call it a specialty which involves plastic reconstructive surgery, cosmetic surgery, diabetic foot, hand surgery and maxillofacial surgery. So this all surgeries, they compile it, and that usually gets treated under a plastic surgery name. Right. Yeah. Correct. So, before we start speaking about our topic today, diabetic foot, again, to set the context right, I want to ask you, why is plastic surgeon related to diabetic foot? So, diabetic foot itself is a very vast topic. Usually, it requires involvement of a multidisciplinary approach. डायबिटिक फुट ट्रीट करने के लिए नॉट ओनली सिर्फ प्लास्टिक सर्जन ही नहीं, इसको आपके लिए एक अच्छे फिजिशियन इज रिक्वायर्ड हु विल टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज. You require a plastic surgeon
टू रिकंस्ट्रक्ट, या फिर आपका जो इंजर्ड एरिया है, डायबिटिक एरिया है, डायबिटिक फुट वाला वुंड है, उसका केयर देखने के लिए यू रिक्वायर अ प्लास्टिक सर्जन. समटाइम्स इफ देयर इज अ criticality involved, you requires intensive care unit specialist as well. Diabetic foot is usually associated with reduced blood supply in the foot. In those case scenario, you require something called as an intervention radiology. So these are the multiple specialties which are involved in treatment of a diabetic foot. That is why we call it a multidisciplinary approach for a diabetic foot care. करेक्ट. सो अब हम हमारे पेशेंट्स को ये भी बताते हैं कि डायबिटिक फुट है क्या और ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू क्यों है. या सो डायबिटिक फुट में क्या होता है ना कि यूजुअली इफ द पेशेंट्स, अगर पेशेंट्स पिछले कई सालों से डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, राइट. सो उन केसेस में उनके पैरों में कुछ नसों की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, बिकॉज द कैल्शियम और द ब्लड सप्लाई इन द फुट दे स्टार्ट गेटिंग लेसर एंड लेसर, राइट. जिसके कारण उनके पैर के मसल्स वीक हो जाते हैं, करेक्ट. पैर के सेंसेशंस वीक हो जाते हैं. दैट लीड्स टू एबनॉर्मल एरिया जहाँ पे प्रेशर नहीं गिरना चाहिए. भगवान ने जिस तरह से अपना फुट बनाया है, राइट. that is supposed to give a pressure in an area which are supposed to bear more pressure, but that starts getting changed because of the change in a physiology. That happens because of पैरों की नसें वीक होना शुरू होती है, and that leads to undue pressure in an area which is not supposed to bear that much pressure, and that causes कैलोसिटीज. और हम नॉर्मल पर्सन में वी कॉल इट अ कॉन, कि पैर में कॉन हो रहा है, बार बार कॉन हो रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है. हमने ऑपरेशन करके कॉन निकलवा लिया बट वो वापस आ जाता है. बिलीव मी, दैट इज नॉट अ कॉन, इट इज अ कैलोसिटी. इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ एन नॉन हीलिंग अल्सर दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. राइट. सो इतना अच्छे से आपने बताया है कि डायबिटिक फुट क्या है, बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि डायबिटीज पेशेंट्स को ही ये फुट इश्यूज होना या डायबिटिक फुट होने का चांसेस बहुत ज्यादा क्यों रहता है. सो बेसिकली क्या होता है मैम कि हमारा इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ इज़ बेसिकली अ मेटाबॉलिक डिसीज़. सो इसमें अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट करना शुरू होता है. डायबिटीज़ में हमारे बॉडी के जो फाइटिंग सेल्स होते हैं, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कहते हैं, दोज स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड. तो वो हमारे बेसिकली प्राइमरी इम्यून मैकेनिज्म है, जो हमारे बॉडी में कहीं पे भी छोटा सा इन्फेक्शन होता है, सो दीज वाइट सेल्स दे गो टू अ प्लेस, they destroy the infection and they take care of our body. But diabetes, it starts affecting those white cells first. So those Right. white cells, they start getting lesser and lesser active as compared to a normal human being. राइट. So not only in foot, also in other organs of our body, कहीं पे Right. भी अगर infection होना शुरू होता है, so that poor immunity makes it difficult for the doctor or surgeon to treat the infection in your body. करेक्ट. करेक्ट. तो ये डायबिटिक फुट के ऐसे कुछ अर्ली साइंस सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, या कभी कुछ ऐसा साइंस वो देखते हैं तो इमीडिएटली उनको मेडिकल इंटरवेंशन का नीड है. यस. सो जैसे मैंने बताया कि पैरों के सेंसेशंस कम हो जाना, पैरों का ब्लड सप्लाई कम हो जाना, दिस लीड्स टू फ्यू एबनॉर्मलिटीज. वन ऑफ देम कैन बी, फर्स्ट थिंग दैट एनीबडी कैन ऑब्जर्व इज चेंज इन द शेप ऑफ द फुट. सो नॉर्मली हमारा जो फुट होता है, that foot that starts changing the shape. So sometimes these toes which are supposed to be like this, they starts getting crumbled. Sometimes your thumb, it starts getting crumbled. Sometimes you start getting callosities or hardness of the skin on the under surface of the feet. Sometimes you start getting ulcers in between the toes. You start getting change in a color of the foot. These are the signs or these are the symptoms that you should not ignore. If there is any person with diabetes which has been there since an year or so, we have to take care of our feet, because that is the entry point of the source of infection in a diabetic foot patient. राइट. बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से आपने बताया कि क्या अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट के ये साइंस सिम्टम्स नहीं हैं, फिर भी वो पेशेंट को कितना फ्रिक्वेंटली अपना फुट चेक करते रहना चाहिए, और ऐसी क्या साइंस है जो उनको देखते रहना चाहिए कि अभी अर्ली स्टेज पे कुछ आया नहीं है. So whenever any patients of a diabetic foot
वो मेरे पास आता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई टेल देम इज, आपको अपने पैरों का अपने चेहरे से ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. फॉर अ डायबिटिक फुट पेशेंट्स आपको हर रोज़ 5 minutes you have to dedicate to look after your feet. So 5 मिनट अभी कैसे कर सकते हैं हम लोग? So whenever we are going for a bath, we have to have a hand mirror in our washrooms. Every diabetic foot patients, or in fact any diabetic patients, they should have a hand mirror in their washrooms, and every day for 5 minutes we have to observe of our under surface of our feet. Let us say if we are having this is a hand mirror. We have to observe of under surface of our feet as to if there are any ulcers or if there are any callosities that are developing. If anything of that sort you come to understand, immediately visit a doctor. Right. But a lot of times I have seen articles and even I have heard that in diabetes patients, even a small cut or a small crack or so this can also be dangerous. Why this is so and what is the reason behind this? So like I said कि diabetic patients के अंदर because of peripheral neuropathy पैरों का sensations बहुत ही poor हो जाता है. So that poor sensations basically makes it difficult for us to recognize if there is any problem in the foot. Sensation कम होने के कारण basically pain is a gift given by God to us. Correct. We find it difficult to understand, but it is actually a gift given by God to us. Why? Because until and unless there is a pain, you won't look into it. Right. So diabetes में वो sensation is gone. Right. So if that diabetic का sensation is gone, then you will not have any pain. What makes it more difficult or more dangerous is because that pain is not there, you will ignore. Correct. There will be infection that will start spreading in an area which has got poor blood supply. जहाँ पे आपका खून का सप्लाई जैसे मैंने बताया वहाँ पे की नसें ठीक से काम उतनी तरह नहीं कर रही है जितनी नॉर्मल पर्सन में करती है. तो अगर वहाँ पे खून का सप्लाई ठीक से नहीं जा रहा है, सो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है. Right. ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँचेगा, that cells, it will be difficult for our white cells to fight that infection, and that can even sometimes becomes overnight it can become dangerous, and that can become limb threatening, or sometimes it can become life threatening. So never ignore any cuts or grazes or any blebs in a foot. If there is any hardening in the foot, please take care of it. You visit your plastic surgeon. So my next question is, in your vast experience of helping diabetes patients with this diabetic foot, what have you seen? Like, what are the common mistakes these diabetes patients do while taking care of their feet? So I will not call it mistakes. I will call them ignorances. Okay. Ignorances means first ignorance that a diabetic patient does is uh, understanding and recognizing that they have diabetes. Yeah. What happens is you will find many people who are running around and have living stressful life. Their sugars will sometimes probably they'll come to know कि over a period of time that my sugar has not been in control. बट दे फेल टू रिकॉग्नाइज इट. दे कि ये तो ठीक है, मेरा शुगर्स तो चलता ही 300-400 तो चलता ही रहता है, इसी से चलता है. एटीट्यूड इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. वाई? बिकॉज दे विल नॉट हैव एनी सीवियर सिम्टम्स. लाइक आई सेड कि अगर उनको सिम्टम्स नहीं होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, सो दे विल नॉट रिकॉग्नाइज दैट एंड दे विल नॉट ट्राई टू ट्रीट दैट सिम्टम्स. Right. So that is first thing. That is first ignorance that they do. Correct. Second ignorance that the diabetic foot people do is trying to take care of their foot. So हमको क्या करना है, रोज 5 minutes हमको हमारे पैर चेक करने हैं, अंडरस्टैंड करना है अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं. We have to keep the feet moisturized. Correct. If there are any cracks which are developing, please moisturize them, take care of them. You have to continuously start wearing footwear. These footwear, first you should be wearing a socks, and उसके बाद में you should be wearing a footwear. That footwear has to be worn round the clock. When I say round the clock, it means even when you are inside the house, when you are outside the house. लोग क्या करते हैं कि
सर मैं तो बाहर जाता ही नहीं हूँ, तो मैं जब भी बाहर I don't जाता need a हूँ तो footwear. हाँ, आई Yeah. डोंट नीड अ फुटवेयर, या फिर Yes. जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं बाहर पहनता हूँ. Yes. But whatever time you are spending inside the house, be it 6 hours, 8 hours, 10 hours, you are walking around, आप किचन में काम कर रहे हो, आप कुछ योगा कर रहे हो, कुछ घर के अंदर कुछ काम कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, आप चल तो रहे हो, और आपका पैर आपके बॉडी का वजन तो टॉलरेट कर ही रहा है, वो पैर का फिजियोलॉजी इज नॉट गुड, and Right. that troubling physiology is going to create more and more problems for the foot. Right. So ignoring to take care of your feet is one of the major ignorance that a diabetic patients they do. So does that really mean that diabetes patients who are actually overweight or obese have more chances of getting diabetes foot? So technically speaking, diabetes it makes it more difficult for the obese patient to take care of their feet rather than a non-obese patient. Okay. ओबेसिटी में डायबिटीज़ का प्रमाण तो ज़्यादा होता ही है, बट इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक केयर ऑफ देयर फीट. Right. लाइक आई सेड कि वो खुद के पैर को अगर एग्जामिन या फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे डेली बेसिस पर, so that will land them in a problem. Right. And it becomes, sometimes they start feeling guilty कि अगर मैं इतना obese हूँ, मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ, so how will I ask my colleague or my family member to every time see and understand कि मेरे पैर के साथ Check क्या my चल रहा feet. है. Correct. So sometimes they start ignoring that, and that can land that into a bigger problem. So, Dr. Om, आजकल मैं देख रही हूँ कि a lot of patients in their young and productive age, they are diagnosed with, high HbA1c. And a lot of times I see कि they had not even done their blood checkups. They just wanted to buy an insurance policy and suddenly they call and say कि मेरा HbA1c 12 है, 13 है. And they had been ignoring diabetes. Now, what I want to ask you is, like, young patients also are exposed to diabetic foot the way the senior citizens are, or there are more chances that only senior citizens will have this issue? So you being the expert nutritionist, you will know it better that nowadays younger population, more and more younger population, Yeah. we are getting with high HbA1c. Yes. So HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमारे पिछले 3 महीने का आपके बॉडी का शुगर कंट्रोल बताता है. आई सरप्राइजिंगली सी फ्यू पेशेंट्स सेइंग दैट सर मेरा HbA1c ज़्यादा आया है क्योंकि मैंने ना पिछले हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा आम खा लिया था. Correct. Yes. बट बिलीव मी, HbA1c इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि कल रात में आपने क्या खाया था या फिर पिछले हफ्ते में आपने क्या खाया है. वो आपको पिछले 3 महीने का आपका डेटा रिकॉर्ड बता रहा है Right. दैट इट हैज़ नॉट बीन अंडर कंट्रोल. एंड लाइक यू सेड कि यंगर पेशेंट्स में the diabetes is more and more, it is becoming more and more early age disease nowadays. Right. और जितना ज़्यादा जल्दी से डायबिटीज़ उनको डेवलप होगा, उतने ही अगर इफ़ यू कीप इट अनकंट्रोल्ड और अंडर कंट्रोल्ड, आपके पेरिफेरल सिम्टम्स का मतलब है कि आपकी किडनीज में, आपके आईज में, आपके पैरों के अंदर, वेसल के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्सिफिकेशन उतना ही रैपिडली होता है. Right. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट सेंसरी न्यूरोपैथी एंड मोटर न्यूरोपैथी, जो भी सिम्टम्स है, पैर के नसों के प्रॉब्लम्स के जितने भी सिम्टम्स है, वो सारे सिम्टम्स यंग पेशेंट्स में भी उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं जितने कि वो ओल्ड पेशेंट्स में बढ़ते हैं. Right, right. So in my last question, you spoke about, diabetes patients should always use the footwear. So any, suggestions about what kind of footwear they should be using, and is there something they should be completely avoiding? So if we are regularly visiting our plastic surgeons for the foot examination, that every diabetic patient should do, despite having ulcers or no ulcers, despite having any symptoms or no symptoms, your 6 monthly foot examination is must. अगर हमारे कुछ फुट के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो रही है या फिर कुछ प्रेशर चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, तो उस केस सिनेरियो में हम एडवाइस करते हैं यू शुड स्टार्ट यूजिंग स्पेशल फुटवेयर. द फुटवेयर शुड बी सच दैट इट शुड नॉट हैव एनी शार्प एजेस, it should not be very tight. Okay. At the same time it should not be loose as well, क्योंकि क्या होता है ना कि if there is a gap between a footwear and a foot, it starts creating some friction. Right. If that friction starts, then it can start give rise to ulcer.
and that ulcer then it gives a hard time to heal.